Okay, so we are going to solve example number 40 in SL Aurora. This is one of the NCERT solved examples of our textbook. This is the example on the basis of what we have done previously. We are going to check whether the given equation is dimensionally consistent or correct or not. Okay, so it is given here, check whether the following equation is dimensionally correct. The equation is, chalo, I'm writing the equation, half mv square is equal to mgh. Okay, what does this equation suggest? Half mv square is kinetic energy ka value and mgh is potential energy ka value. Okay, we know कि ये दोनों एनर्जी से, वन इज काइनेटिक वन इज पोटेंशियल. चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ रहे थे तब बोला गया था कि कोई भी एनर्जीज व्हेन यू कंसिडर इट्स गोइंग टू हैव सेम यूनिट व्हिच इज जूल, कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, राइट. अदर देन दैट व्हेन वी हैव अंडरस्टूड डायमेंशनल एनालिसिस, तब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब हमने जस्टिफाई किया था तभी भी देखा था कि एनर्जी के लिए कोई भी टाइप की एनर्जी हो, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि हर एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी के लिए एमएलटी तो सेम ही रहने वाला है. सो दिस इज द एप्लीकेशन विच विल रीअश्योर दैट अंडरस्टैंडिंग दैट वी ऑलरेडी हैव. चलो अब स्टार्टिंग विथ एलएचएस, आई एम टेलिंग यू हियर अगेन, हाफ जो है वो कांस्टेंट है, इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो वो हमें कंसिडर ही नहीं करना है एमएलटी में. ओके, mv square mass, so that is what m1 l0 t0 and v square. तो हम स्टेप वाइज देखें. m का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और उसका पावर हो जाएगा स्क्वायर. ओके, सो मास इज m1 l0 t0 and velocity, so that its unit is meter per second, so that will be what, m0 l1 t minus 1 meter per second, and velocity का पूरा unit है square. So we get the end answer as what, mass का मतलब m का power 1 plus 0, that will be 1, length का 0 plus 1, that will be 1, time का 0 plus minus 1 into 2, मतलब that will be what, 0 minus 2. तो इसका end power क्या आ जाएगा, it will be minus 2. Okay, now we are going to compare the same thing with RHS. So that is what, mgh. Okay, अलग अलग लिखना था. मास का mlt, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का mlt और हाइट का mlt. Now mass का mlt is what, m1 l0 t0, gravitation acceleration कोई भी टाइप का acceleration हो, the unit is going to be meter per second square only. So m0 l1 t minus 2 और h मतलब length, height which means length measured in meters, so it is going to be what, m0 l1 t0. Okay, summing up everything, what we are going to get is, कुछ गलती किया मैंने? Yes, we did one small mistake here. n का पावर यहाँ पे 1 के ऊपर भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. I'm so sorry for this mistake. Now this is going to be what, finally ending up m1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, so this is going to be m1 l 0 plus 1 plus 1, so this is L2 and t to the power 0 plus minus 2 plus 0, so this is going to be again minus 2. So here we can see that LHS और RHS दोनों के MLT मैच हो रहे हैं, then yes, this equation is dimensionally correct. Come on, write down.